Good morning. Good morning. Good morning. I'm asking you good morning. Very good morning. Okay. Planning. जो मैंने वर्तमान जॉइन कर जाओ सर नोट मेकिंग क्लास को समझने क्योंकि नो नो नोट मेकिंग रा किसी भी समरी लास्ट को लिखना दरकार नहीं नोट मेकिंग जो फॉर्मेट रहा था तो नोट मेकिंग करियो जो मैंने एबे जे जॉइन कर जाओ पिला माने फटाफट तमरो फ्रेंड को भी कह दियो से माने मध्ये जॉइन कर दियंतु आउ वीडियो टी फटाफट लाइक कर दियो क्लास स्टार्ट करिबा ऑलरेडी 10 टा बाजी गलानी 10 टा बहुत लेंथी सेशन अछि तो क्लास स्टार्ट करिबा विशेष किछि लेट करबा नाही फटाफट टिके तम फ्रेंड्स माने बा कोचिंग ग्रुप हो कॉलेज ग्रुप हो जो माने भी सीएचएससी 2026 रे बोर्ड एग्जाम दबा को जाउछंती बोथ रेगुलर एंड एक्सरेगुलर समस्त को पई ये वीडियो टी गुरुत्वपूर्ण तेनो समस्त के तमे ये वीडियो को फॉरवर्ड कर दियो ओके बुझि परला समस्त ओके स्टार्ट करिबा आज रे सेशन आज रे सेशन स्टार्ट करिया पूर्व बिले मु कहि रखे आज रे सेशन रे हमें प्रीवियस रे जो दुई पार्ट करथिले ता धरे हमें प्रोज पोएट्री रे समस्त विषय रो इंपोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कशन कर देथिले ता सहित डाटा ट्रांसफर रु पाई चार्ट कर देथिले डिक्शनरी स्किल कर देथिले एवं बटल चेक करथिले पिला माने कोन से भूल तो बसत रिपोर्ट राइटिंग रो वीडियो एतो बलिया मध्ये आसी पारिनी चेष्टा करा जाउची संध्या पूर्व तमान रिपोर्ट राइटिंग मध्ये कंप्लीट करिबा पाई ओके जो मैंने बारंबार रिपोर्ट राइटिंग कमेंट करछो सेति मध्ये चेष्टा चलीची जदि रिपोर्ट राइटिंग हम चेष्टा करछो 100% आनिबा पाई ता पूर्व आज रो टॉपिक रे हमें बुक 2 जो स्टोरी सब थिला से स्टोरी रो इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब डिस्कशन करिबा गोटे मिस्ट्री ऑफ मिसिंग कैरेक्टर अछि ता सहित माय मदर अछि स्टे हंग्री स्टे पुलिस अछि ता सहित आ गोटे दि मंकी स्पॉट चारटी चैप्टर आज इंपोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कशन करिबा ओके जो माने विषय टी को टोटल पढी नाओ किछि असने तुमे माने एमसीक्यू सेशन में टोटल पार्टिसिपेशन कर पार्टिसिपेशन में मध्य तुमे माने कर किछि एमसीक्यूज रिकैप सहित विषय रो गोटे समराइजिंग आईडिया तुमे माने मध्य पाई जिवो प्रथम विषय थिला तमरो मिस्टरी ऑफ मिसिंग कैप रो मिस्ट्री कोन थिला इंग्लिश रो इंपोर्टेंट एमसीक्यू ऊपर हमें आज डिस्कशन करिबा ओके ठीक अछि वेरी गुड मॉर्निंग प्रथम क्वेश्चन थिला तो प्रोटैगनिस्ट ऑफ द एक्सट्रैक्ट माने प्रश्नर मींस प्रोटैगनिस्ट माने कोन प्रोटैगनिस्ट माने होची नायक से कहिबा कथा ए जो एक्सट्रैक्ट बा ए जो लेखाटी लेखा जाईची यार नायक किए बाबू वीर किशोर द नैरेटर श्री महा ऑल ऑफ द अबव ए जो लेखाटी लेखा जाईची यार किए नायक होचंती किए मुख्य नायक ए जो लेखा बा द मिस्ट्री ऑफ मिसिंग कैप रो मुख्य नायक होचंती किए कार्तिकेश्वर जी ना कहिए ऑप्शन ए प्रयास का ऑप्शन बी भाग्यलक्ष्मी का ऑप्शन सी ओके वेरी गुड ईशा सामंतराय तुम्हारा मध्य सी ठीक है अन्य मान फटाफट कमेंट कर दिया फटाफट कमेंट कर दियो पहले द मिस्ट्री ऑफ मिसिंग कैप रो नायक की बट टोटल लेखाटा कहा को नेकी लेखा जाय ओके वेरी गुड पिला माने जो थिले श्री महाराणा तांकू नेकी ये टोटल लेखाटा लिखा है तनु द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द एक्सट्रैक्ट इज श्री महाराणा हला करेक्ट आंसर ओके जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन थिला श्री महाराणा कम्स ऑफ ए डैश फैमिली श्री महाराणा गोटे को प्रकार फैमिली को बिलोंग्स करथिले कल्चर हम्बल रिच नन ऑफ द अबव कल्चर पारंपरिक हम्बल दयाशील रिच धनी नन ऑफ द अबव को प्रकार फैमिली को बिलोंग्स करथिले को प्रकार फैमिली को बिलोंग्स करथिले वेरी गुड प्रयास भाग्यलक्ष्मी लिखिना ठीक अछि वेरी गुड श्री महाराणा बिलोंग्स टू ए रिच फैमिली इज योर करेक्ट आंसर ओके क्वेश्चन नंबर 3 थिला श्री महाराणा इज नोन फॉर हिज डैश जेनरोसिटी कॉन्सेंस
पैट्रियोटिज्म रिमार्केबल हॉस्पिटैलिटी श्री महाराणा कौन पई जणा सुना थिले जेनेरोसिटी मींस कोन ना उदारता कॉन्सेंस मींस विवेक पैट्रियोटिज्म मींस देश प्रेम रिमार्केबल हॉस्पिटैलिटी माने अतिथि सत्कार कौन पई श्री महाराणा अत्यधिक जणा सुना थिले कौन पई जणा सुना थिले वेरी गुड भाग्यलक्ष्मी ठीक अछि रुक्मणी रामधारी ठीक अछि गीतिनाथ ठीक अछि कार्तिकेश्वर ठीक अछि वेरी गुड फटाफट कमेंट कर चलो फटाफट कमेंट कर चलो ठीक अछि प्रयास ठीक अछि ओके जो माने कहउछ रिमार्केबल हॉस्पिटैलिटी से मानकर आंसर होची करेक्ट आंसर आतिथ्य सत्कार पई श्री महाराणा बहुत भाबरे परिचित थिले बा भलो भाबरे परिचित थिले क्वेश्चन नंबर 4 थिला इंडियास इंडिपेंडेंस गेव राइट्स टू डैश भारतर स्वाधीनता काहाकू गोटे नुआ जिनिस कोन तयारी करथिला फोर मेजर कास्ट चारिटा मेजर जाति सम पैट्रियट्स किछि देशभक्त पॉलिटिशियंस माने राजनीतिज्ञ बोथ ए एंड बी माने सम पैट्रियट्स और फोर मेजर कास्ट बोथ ए कोन हो करेक्ट आंसर फटाफट कमेंट करो भारतर स्वाधीनता कोन तयारी करथिला वेरी गुड भाग्यलक्ष्मी ठीक अछि भानुप्रिया भूल अछि बेटा रुक्मणी रामधारी ठीक अछि कार्तिकेश्वर भूल अछि बेटा भूल अछि मोनालिसा तमरो मते भूल अछि राइट करो कि देछि इंडिया रो जो इंडिपेंडेंस थिला भारत रो स्वाधीनता कोनटा राइज करथिला लोक मानक उत्तरे कोनटा राइज करथिला ले स्वाधीनता आसीबा फल रे लोक मानक प्रभावे देश प्रेम रो भावना जागृत हितरा तेनु करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन बी सम पैट्रियट्स किछि देशभक्त भारत रो स्वाधीनता किछि देशभक्त मानको जन्म देथिला ओके जीवन नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन तला श्री महाराणा's ambition is to be an MA MP MLA honorable minister श्री महाराणा का ambition लक्ष्य कोन थिला से जने एमए हेबे जने एमपी हेबे जने एमएलए हेबे जने ऑनरेबल मिनिस्टर हेबे श्री महाराणा को लक्ष्य कोन थिला रुक्मणी रामधारी भूल अछि बेटा टिके करेक्ट करो कार्तिकेश्वर तमर मध्य भूल अछि प्रयास ठीक अछि तनुश्री ठीक अछि जितना ठीक अछि रश्मि ठीक अछि भाग्यलक्ष्मी ठीक अछि वेरी गुड जो माने सी ऑप्शन कमेंट करछ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बाय एमएलए समान का आंसर होची करेक्ट आंसर श्री महाराणा का गोटे एम्बिशियस थिला कि से एमएलए हेबे नॉट ऑनरेबल मिनिस्टर एमएलए हेला कोन जने मिनिस्टर होबो नॉट एमएलए जने न हे कि मिनिस्टर नि करिबा नाही तो करेक्ट आंसर हला एमएलए दी वर्ड डेब्यूट मींस डेब्यूट माने कोन डेट फर्स्ट मेडन कंट्रीब्यूशन डेब्यूट माने कोन पले डेब्यूट माने तमे जानछ कोन साधारणतः जो माने क्रिकेट खेल देखंती बा कोइ किछि गोटे नुवा क्षेत्र हेले सी कोइ कहले ना से तार नुवा डेब्यू कला बा डेब्यूट कला कोन डेब्यूट कोन डेब्यूट माने कोन ना आरंभ करिबा बा प्रथम पले डेब्ट माने होची एथि ऋण एथि जो फास्ट देइछे ता माने शीघ्र मेडन माने प्रथम कंट्रीब्यूशन मींस कोन सहायता करिबा ताले कोन हबो डेब्यूट माने कोन हबो मु ऑलरेडी ओडिया रे कहि सारिलानी फटाफट को डेब्यू माने कोन हबो नो बेटा डी हबनी डी ऑप्शन कमेंट करछे डी कदा भी हबो नाही जो माने डी ऑप्शन कमेंट करछे डी कदा भी हबो नाही कंट्रीब्यूशन पिले डेब्यू रो कहली प्रथम करी आरंभ करिबा पिले प्रथम करी आरंभ करिबा अन्य एक शब्द अछि जोटा हला मेडन मींस प्रथम बुझिला तेनो करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन नंबर सी ओके जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन जोटा क्वेश्चन नंबर 7 in an yearly independent India a minister's daily life was mainly confined to जेतेबेले भारत तार प्रथम स्वाधीनता पाइथिला बा प्रथमे जेतेबेले स्वाधीनता पाइथिला सेतेबेले मिनिस्टर मानको डेली लाइफ मेनली कन्फाइंड तांकर डेली लाइफ ता कहा भितर सीमित थिला कहार ना मिनिस्टर मानकर ट्रैवलिंग माने बुलिबा डेलिवरिंग स्पीचेस एट पब्लिक फंक्शन लोकपूर्ण जगह रे जो सब उत्सव होची सेठी स्पीच दबा मीटिंग पीपल लोक मानको भेटिबा ता सहित नॉन ऑफ दीज एथि मध्यरु कोनोसी की नुहे एथि मध्यरु कोनोसी की नुहे क्वेश्चन नंबर 7 वेरी गुड रूपाली मोनालिसा
रूपाली रो भूल अछि, भाग्यलक्ष्मी ठीक अछि, रूपाली भूल अछि, प्रयास, सोनाली, रमेश ठीक अछि, कार्तिकेश्वर ठीक अछि, प्रयास ठीक अछि। जो मैंने पूछे डिलीवरिंग स्पीच एट पब्लिक फंक्शन से मैंने आंसर होची करेक्ट आंसर। ओके बुझी परलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, था ए डैश प्रिपरेशन वाज गोइंग ऑन फॉर मिनिस्टर विजिट ପାଇଁ କୋଉ ଭଳି ପ୍ରିପାରେସନ ଚାଲିଥିଲା? ହେକ୍ଟିକ, ମେଟିକୁଲସ୍, ଟିପିକାଲ, ବୋଥ ଏ ଏଣ୍ଡ ବି। ହେକ୍ଟିକ ର ମାନେ ଥିଲେ କଣ ନା ହେକ୍ଟିକ ର ମାନେ ହଉଛି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତବାନ, ଅତି ବ୍ୟସ୍ତବାନ, ଚଳଚଞ୍ଚଳବାନ। ମେଟିକୁଲସ୍ ମାନେ କଣ? ମେଟିକୁଲସ୍ ମାନେ ହଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦୃଢ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଟିପିକାଲ, ଟିପିକାଲ ମିନ୍ସ ସାଧାରଣ ଭାବ, ଏମିତି ଚାଲିଥିଲା, ଯେମିତି କିଛି ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଅପସନ ଡି ହଉଛି ବୋଥ ଏ ଏଣ୍ଡ ବି, ମାନେ ଅତି ବ୍ୟସ୍ତରେ ଚାଲିଥିଲା, ତାପରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତ କଣ ହବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର? very good सोनाली, मोनालिसा, रूपाली, कार्तिकेश्वर, भाग्यलक्ष्मी, रामधानी, प्रयास, शकुंतला, विश्वभानु, विभा सिंधु, प्रयास, वेरी गुड रमेश, कार्तिकेश्वर, भानुप्रिया ठीक है। तनुश्री जो माने भी कहउछ बोथ ए एंड बी माने चलचंचल थिला ता सहित अति सूक्ष्म जिनिस सब प्रत्यय मध्य दृष्टि आरोप करा जाउतला। सेमान का आंसर होची करेक्ट आंसर। ओके जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिला एट लास्ट द बिग डे कम, शेषरे से बड़ दिनटी आसी पहुंचिला। द अंडरलाइन वर्ड मींस एति पचारछि जो अंडरलाइन वर्ड करा हैछि तार माने कोन? पिला माने टिके गोटे मिनिट क्वेश्चन टा चेक करनो छी। बिग डे तमर अंडरलाइन वर्ड है बिग डे, अंडरलाइनिंग वर्ड है बिग डे। या माने कोन? द अराइवल ऑफ द मिनिस्टर, जो दिन मिनिस्टर आसी पहुंचिबे। फुलफिलमेंट ऑफ श्री महाराणा सा ड्रीम, महाराणा कर ड्रीम परिपूर्ण होबा दिन। द मेमोरेबल डे ऑफ द विलेजर्स, विलेजर मानकर स्मरणीय दिवस। द नैरेटर्स डिलाइट, लेखकंकर उत्सुकतार दिन। बिग डे के एठी बिग डे रो माने कोन? को डे को एठी बिग डे बोली कहै छी। फटाफट कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 1 बिग डे रो माने कोन एठी? At last the big day come. Sorry, came. Arrival of the minister, very good Bhagyalakshmi. रूपाली कहिला श्री महाराणा से ड्रीम, नो बेटा भूल अछि। रमेश बी, रामधारी बी, नहीं बेटा जो माने बी कमेंट करछ बी होबा नै। At last the big day comes माने सेई दिन आसी पहुंचला जो दिन कोन हबो कि मिनिस्टर आसी पहुंचीबे गां रे, सेनु करेक्ट आंसर हबो द अराइवल ऑफ द मिनिस्टर्स। ओके जो माने बी कमेंट करछ बी होबा नहीं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन दिला he loved to keep his feet on the ground, the underline phrase mean, the underline phrase mean, what a minute, keep his feet on the ground eta hoche underline word, keep his feet on the ground eta hला underline word। ए underline word no मानेटा कोन? to maintain normalcy, गोटे साधारण जीवन यापन करिबा। to keep up one's prestige, जन तो प्रेस्टीज अनुଯାयी तळे चली चली जीवा। to keep a sensible and practical attitude in life, जीवन रे गोटे साधारण भाव रे बंचिबार लक्ष्य। to keep it intact, गोटे माने कलहपूर्ण भाव रे चली जाय कोन पाई keep his feet on the ground यार माने कोन? रिपोर्ट राइटिंग कोन पडिबो प्लीज को तो ऑलरेडी काली गोटे वीडियो सब रिपोर्ट राइटिंग दिया है। इम्पोर्टेंट रिपोर्ट जहां भी तमे देखिबा जदी देखि निया जाय कि चैनल देखि। ओके क्वेश्चन नंबर 10 keep a sensible and practical attitude in life, जीवन रे गोटे सेंसिबल सहित प्रैक्टिकल मींस कोन ना सद्भावपूर्ण जीवन यापन पई श्री महाराणा कोन करथिला चाली चली जायथि। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन थिला द एलिफेंटाइन मिनिस्टर इंडिकेट्स ए और आर, एठी जो देला एलिफेंटाइन मिनिस्टर एटा गोटे कोन? एलिफेंट लाइक, एलिगेंट, मैजेस्टिक, हाइपरबोल एटा कोन? द एलिफेंटिंग मिनिस्टर इंडिकेट्स एटा गोटे इंडिकेट कोन करूची? कोन करछि इंडिकेट? सर कोथिले देखिबो आपन को क्लास रे? हां YouTube चैनल आपन एसएस फाउंडेशन YouTube चैनल अछि जाई। ओके पहले की कोइ बरो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ हाइपरबोल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ हाइपरबोल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपरबोल?
कि कमेंट कर परिबो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपरबोल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपरबोल ले जतबे गोटे कथा को अतिरंजित करी कहा जाए सेटा को हम कोए हाइपरबोल माने जोटा पॉसिबल नो बट सेटा को सेमती कहा जाए ताको हम कहू हाइपरबोल तो एठी सेटा करा जाय कोन ना गोटे एलिफेंटिक मिनिस्टर एलिफेंट माने गोटे मनुष्यटे गोटे हाथी भलिया मोटा हे परिबो की हे परिबो नै किंतु एठी कहा से तो कंपेयर करा जाय एलिफेंट सहित एलिफेंट लाइक हो बट किंतु एटा अतिरंजित करा है तेनु दिस इज ए हाइपरबोल बुझिलो दिस इज ए हाइपरबोल जोटी अतिरंजित करी कथा की कुआ जाय ओके माई दिस इम्प्लाइज ए जो माई शब्दटी लेखिला दिस इम्प्लाइज एटा कोन इम्प्लाइज करछि बा काहा को दर्शाउछि श्री महाराणा से ड्रीम केम ट्रू महाराणा कर केम माने जो ड्रीम थिला स्वप्न थिला ता सतरे परिणत हैला द विलेजर्स फोकस ऑन द मिनिस्टर विलेजर कर फोकस थिला मिनिस्टर को ऊपर श्री महाराणा प्लेजर श्री महाराणा कर खुशी नॉन ऑफ द एबव माई रा मतलब कोन बराबर कमेंट करो माई कमन माई एटी पुनी देखा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन अछि मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन बराबर कमेंट करो 12 वेरी गुड आईटी रो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर दरकार थिला व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन करी सुब्रांश सर को मैसेज करो ओके वेरी गुड पिले एठी माई रो दिस इम्प्लाइज होची एठी श्री महाराणा कर जो ड्रीम थिला बा तांको निजर जो ड्रीम थिला सेटा सत्य रे परिणत हैला ओके तमे कहो सर आपण केमि जानले एटा माई रो मतलब है पिले एटा जतो स्टोरी ता पढिबो से स्टोरी रे देखिबो कोन माई वर्ड यूज करा है सेटा स्टोरी बिहाफ ऑफ रे तमे जानि दिबो ओके The minister and his entourage were treated to tender coconut juice. The underline word एठी जणा पड़ जाउ entourage means एठी entourage रो माने कोन the minister and his sycophants the minister sycophants पिले माने कोन ना चामचा minister एवं ताको चामचा the minister and his cooks means ताको रोसैया the minister and his relatives minister ताको बंधु the minister and his assistant minister सहित ताको assistant कोटा को करेक्ट आंसर कोटा को करेक्ट आंसर वेरी गुड पिले एंटोरजेस रो मतलब हला कोन ना असिस्टेंट निजे मिनिस्टर एवं ताको असिस्टेंट को कहा जाई छी दी मिनिस्टर तो कॉमन अछि एंड हिज एंटोरज माने हला असिस्टेंट ओके बुझि परलो ओके जीवन नेक्स्ट क्वेश्चन थिला mastering all my self confidence I slowly approached the window facing the pond the underline word means एठी पचारछि जो अंडरलाइन वर्ड करा है कि से वर्ड रो मानेटा कोन पिले ई सब जाक वोकाबुलरी स्किल मस्टरिंग तळे अंडरलाइन करा है पिले मस्टरिंग मींस मानेला कोन एकत्र करिबा एखाटी करिबा तो चारिटी ऑप्शन देला गोटेला रोलिंग गोटेला गैदरिंग गोटेला ब्रीविंग गोटेला नॉन ऑफ द अबव कोटा हबो करेक्ट आंसर मैं ऑलरेडी कहि देली मस्टरिंग रा मतलब होची तुमको एखाटी करिबा त कोटा हबो करेक्ट आंसर वेरी गुड मिथिला हमर गैलेक्सी ठीक अछि कार्तिकेश्वर वेरी गुड जो माने कहउछ ऑप्शन कोछ गैदरिंग से माने का आंसर होची करेक्ट आंसर એટલે मस्टरिंग रो मतलब होची गैदर करिबा गैदर मींस एखाटी करिबा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन दिला the most extraordinary event the narrator witnessed was जो extraordinary event थिला जहा को narrator event रे तर कोन थिले witness निजे प्रत्यक्षदर्शी थिले सेटा कोन थिला झंडूस अराइवल the ministers snoring झंडूस exit with the minister's cap the monkey's glance ए जो चारटी देला या जो कोटरे राइटर निजे प्रत्यक्षदर्शी थिले माने निजे देखिथिले कोटा निजे देखिथिले वेरी गुड भाग्यलक्ष्मी लिखू ठीक अछि इतना ठीक अछि कार्तिकेश्वर ठीक अछि वेरी गुड जो माने सी ऑप्शन कमेंट करछ झंडूस एग्जिट विथ द मिनिस्टर्स कैप सेमानकर आंसर होची करेक्ट आंसर ओके जो झंडू बेली जो थिला माकरटी से आसीथिला एवं मिनिस्टर को कैप को नै चली जायतिला
The expression like a bolt from the blue, like a bolt from the blue, यार मानेटा कौन से पचारछि? थंडरस साउंड माने कोन घड़घड़ीर शब्द, रम्बलिंग ऑफ द थंडर सेही समान करथा टिके उल्टी देछि, कठिन कर्कश शब्द घड़घड़ीर, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज टू हैपन, स्टन्ड इन डिसबिलीफ, स्टन्ड इन डिसबिलीफ माने कोन ले ये कहि परिबो स्टन्ड इन डिसबिलीफ, स्टन्ड इन डिसबिलीफ, स्टन्ड इन डिसबिलीफ माने कोन? स्टन्ड इन डिसबिलीफ माने आश्चर्य और अविश्वास पूर्ण भाव में चकित निबा, आ अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज माने अत्यधिक चकित होई जिबा, एटी पचार से लाइक ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू रो माने कोन हबो? लाइक ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ठीक कमेंट करे तमे जे गोटे भी करेक्ट आंसर आसीनी पहले स्टन्ड एंड डिसबिलीफ आश्चर्य और अविश्वास पूर्ण बा विश्वास न करिबा ता माने होचे लाइक ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, पहले एटा गोटे वोकैबुलरी कांसेप्ट वाला क्वेश्चन तो या पे ध्यान देइतो। ओके, नेक्स्ट इला क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच ऑफ दीज एक्सप्रेस द नैरेटर सैडनेस, कोटा लेखकक दुखपूर्ण भावना को दर्शाइछि? एकस्टी, एक्साइटमेंट, फ्रस्ट्रेशन, पेंसिव, कोटा लेखकक अविश्वास आश्चर्य, ठीक है, कोटा लेखकक दुखपूर्ण भावना को दर्शाइछि? क्वेश्चन नंबर 17 पिला में जेतरा पढिथिले डैफोडिल्स पोएम से दीटा मुथिला गोथिला भैकेट आ गोथिला पेंसिल, तो भाबुची समस्ते से पेंसिल मोड ही आंसर जानि परथो क्या आंसर हो पेंसिल, पेंसिल मींस कोन ना दुखपूर्ण। ओके, नेक्स्ट इला द नैरेटर फाउंड हिमसेल्फ एट होम एट सी इन ए फिक्स इन ए स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट, नैरेटर निजो को केउ थारे पाइथिले? एट होम घरे, एट सी समुद्र पाखरे, इन ए फिक्स गोटे स्थान रे फिक्स थिबार, इन ए स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट निजो को गोटे एक्साइटमेंट स्टेट रे पाइथि, गोटे हबो करेक्ट आंसर 18 डी काटिके सो नो 18 डी हबो नै, नो नो डी हबो नै, इन ए स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट हबो नै, फटाफट देखि कमेंट करो। भाग्यलक्ष्मी सी वेरी गुड, इन ए फिक्स वेरी गुड, जो माने कमेंट करछ इन ए फिक्स निजो गोटे स्थिरत्वपूर्ण भावना रे पाइछे सेमानकर आंसर होछि करेक्ट आंसर। ओके, वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन थिला श्री महाराणा स्टूड थंडरस्ट्रक, दी अंडरलाइन वर्ड मींस, एठी थंडरस्ट्रक मीन तळे अंडरलाइन करो। ओके, यार मीनिंग कोन? टेरिबल डिसअप्रूवल, शॉक्ड और सरप्राइज्ड, नर्वस, इन ए स्टेट ऑफ शाउटिंग। टेरिबल डिसअप्रूवल मींस कोन कि से सेतिरे सहमति नथिले, शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड शॉक होइतिले माने आश्चर्यचकित होइतिले, नर्वस नर्वस थिले ता सते इन ए स्टेट ऑफ शाउटिंग निजे चिल्लौथिले, थंडरस्ट्रक माने कोन कोन हबो 19 वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, जो मैंने बी ऑप्शन कमेंट करछो शॉक्ड और सरप्राइज से मानकर आंसर होची करेक्ट आंसर। ओके, थंडरस्ट्रक मींस आश्चर्यचकित होइजिबा। क्वेश्चन नंबर 20 थिला इट मे डिवास्टिंग इफेक्ट्स ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री इट रेफर्स टू, ए जो वाक्यटा देला कि इट मे हैव डिवास्टिंग इफेक्ट ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री, एटा काहा को रेफर करूची? ऑन रिवीलिंग ऑफ मिस्टीरियस मिसिंग कैप, श्री महाराणा's स्ट्रेंज बिहेवियर, द मंकी, नन ऑफ द अबव। उपरोक्त जो वाक्यटी देला सेटा काहा को रेफर्स करूची? काहा को रेफर करूची? फटाफट कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 20 पिला माने तो इट मे हैव डिवास्टिंग इफेक्ट्स ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री, एटा रेफर्स करसी कोन ना ऑन रिवीलिंग ऑफ मिस्टीरियस ऑफ मिसिंग कैप, जो मिसिंग कैप रे मिस्टीरियस तला सेटा रिवील हेई पारिला नाही, जहा फल कि कोन ना गोटे इफेक्ट पडिबा पॉलिटिक्स ऊपर बोली देशर कुहा जाई। ओके, द फर्स्ट वन टू अप्राइज महाराणा ऑफ द इंसिडेंट वाज, प्रथम व्यक्ति किए थिला जे कि महाराणा कर जो सहित जो घटना घटिला ताको मूल्यांकन करिथिला?
PA of the minister, personal assistant किए थिला मिनिस्टर कर, the narrator इजे लेखक, a villager गोटे गार लोक, the entire staff of the minister, staff कर समस्त कोन जो मिनिस्टर के जते सब स्टाफ थिले से समस्त कोटा करेक्ट आंसर 21 किए प्रथमे महाराणा को घटनार मूल्यांकन करथिला बा प्रत्येक वर्ष थिला किए A P of the minister, P of the minister पूरा B very good भाग्यलक्ष्मी B पिले दी नैरेटर जेतेबेले झंडू आसी कि कैप टाको नै जाई छ ओनली नैरेटर थिले नैरेटर ही प्रथमे देखते तो करेक्ट आंसर कोन होबो तब करेक्ट आंसर होबो दी नैरेटर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन था the incident had thrown a wet blanket on the occasion the underline word thrown a wet blanket on the occasion या माने कोन द इंसिडेंट जो घटनाटी घटिला थ्रोन ए वेट ब्लैंकेट ऑन द ओकेजन या माने कोन कलर डैम डिफ्लेट डिफेस्ट पेपर ओके थ्रोन ए वेट ब्लैंकेट ऑन द ओकेजन पहिले डिफेस्ट माने होची विकृत आ डिफ्लेट माने होची अशुद्ध बुझि परलो कलर मींस माने जानछ रंगपूर्ण डिपेंड मींस कोन आश्चर्यजनक तो कौन है करेक्ट आंसर ये जो घटनाटी घटिला गोटे वेट ब्लैंकेट पकैला ऑन द ओकेजन पर वेरी गुड ले सर बी होगा ठीक है ले करेक्ट आंसर होची तमरा डैम ओके नेक्स्ट क्वेश्चन थिला श्री महाराणा एक्सेल्स ऑन द आर्ट ऑफ डैश एक्टिंग कोएक्सिंग अट्रैक्टिंग द पीपल अटेंशन ऑल ऑफ द अबव महाराणा एक्सेल्स on the act कोन थिला ना एक्टिंग कोएक्सिंग पिले माने कोन जे कहि परियो कोएक्सिंग माने हला मिठा कथा कहि अन्यर मनटा को टाणी आइबा मिठा कथा कहि अन्यर मन को टाणी आइबा ओके ठीक अछि बी होगा नो बी नहीं होगा सी वेरी गुड मिस्टर महाराणा निज कथा माध्यम रे अट्रैक्टिंग द पीपल अटेंशन लोक मानकर जो अटेंशन थिला ताकू निज आड़ को मोहित करि परथिले द मिस्ट्री ऑफ मिसिंग कैप रेस्ट एन एक्साइटमेंट ए फियर ए ह्यू एंड क्राई ए हम्बलनेस ए नॉमनेस कोटा करेक्ट आंसर मिस्ट्री ऑफ मिसिंग कैप कोनटा करथिला एक्साइटमेंट क्रिएट करथिला गोटे भयर करथिला ए ह्यू एंड क्राई क्रिएट करथिला ना नॉमनेस क्रिएट करथिला वेरी गुड इतना प्ले करेक्ट आंसर होची ए ह्यू एंड क्राई ओके द वर्ड ascended means कोन ना खसीबा बा कमीबा तार मीनिंग कहा सहित समान क्लाइंब रिएक्टेड डिपार्टेड नन ऑफ द अबव ascended रो माने कोन ascended माने होची कमीबा बा तळको खसीबा कोन हो करेक्ट आंसर 25 फटाफट कमेंट करो प्ले क्लाइंट माने होची ऊपर को चढ़ीबा रिएक्टेड मींस होची कोन ना प्रतिक्रिया प्रकाश करिबा डिपार्टेड माने होची तळको खसीबा तेनो करेक्ट आंसर होबा डिपार्टेड जोटा के ऑप्शन नंबर सी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन तला व्हिच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू वो स्टेटमेंट ता ट्रू द मिनिस्टर्स प्रेजेंस वाज बोरिंग श्री महाराणा's nice was one of the high school educated girl of the India श्री महाराणा lacked willpower the narrator appreciates श्री महाराणा's first speech को स्टेटमेंट ता एठी कोन ठीक बोली देई अछि को स्टेटमेंट ता फटाफट कमेंट करो 26 वेरी गुड क्रिस लिपू गीतिना भूलेला गीतिना भूलेला 26 रो उत्तर होची श्री महाराणा's nice was one of the high school educated girl of the area एटा कोठी मध्ये लिखा जाय नाही बुझि पाइलो तो करेक्ट आंसर होबो ऑप्शन नंबर बी ओके एजा नेक्स्ट क्वेश्चन ला क्वेश्चन नंबर 27
Which one of the following statement is false? ये जो चारिटी सेंटेंस देछि कोटा false. श्री महाराणा's voice increased in gradual loudness. श्री महाराणा का voice को gradually loudness को increase कला. A nobleman has taken the minister's cap purposefully. गोटे nobleman कौन करछि purposefully नहीं जाइछि मिनिस्टर को कैप को. The minister gracefully accepted the money. The minister delivered a very short speech. Could have a correct answer? Could have a correct answer? Very good, very good. Film minister छोटो speech देई नथिले तेनो कोटा false हबो. The minister delivered a very short speech. एटा हला तमरा false. The word esteem means esteem माने कोन? Estimate करिबा माने कोन उटा आकलन करिबा. Respect माने कोन? सम्मान देवा. Fear भय करिबा. Tribute उत्सर्गीभूत करिबा. पहिले एस्टीम रो माने होउची तमरो कोन? सम्मान देवा. एस्टीम रो माने होउची सम्मान देवा. तेनो कोटा हो करेक्ट आंसर? ए जो चारटा ऑप्शन भितरु कोटा हो करेक्ट आंसर? 28. वेरी गुड. रेस्पेक्ट होउची तमरो करेक्ट आंसर काने एस्टीम रो माने सम्मान देवा. रेस्पेक्ट रो माने मध्ये सम्मान देवा. क्वेश्चन नंबर 29 थिला व्हिच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज ट्रू? को स्टेटमेंट्स ता एथि मध्यरु ट्रू अछि बा ठीक अछि. The minister was very poor. His excitement knew no limit. Sri Maharana was a liar. None of the above. ये जो चारोटी सेंटेंस अछि को स्टेटमेंट ता सेति मध्यरु ट्रू बा ठीक अछि. 29 क्वेश्चन विथ आंसर कमेंट करो जेमति जानि पर तुम सुझा हबो. क्वेश्चन विथ आंसर कमेंट करो. 29 और अब 29 29 सी समस्त क्वेश्चन सी. 29 भाग्यलक्ष्मी वेरी गुड. फटाफट कमेंट करो समझते. ओके 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 वेरी गुड. पहले जो माने बी ऑप्शन कमेंट करछ हिज एक्साइटमेंट नो हैज नो लिमिट by excitement knew no limit. सेवन का आंसर होछि करेक्ट आंसर. ओके. The repetition of ha ha indicates the tone of the minister. ये जो हा हा शब्दटा मिनिस्टर को टोन को इंडिकेट करछि. कोमिकल माने कोन ना नूतन. आ गोटे थिला आयरोनिक मींस कोन माने पूरा दृढ़ भाव प्रखर भइया. आ गोटे थिला सैटिरिकल मींस हसपूर्ण. ट्रेजिक माने दुख. जो हा हा शब्दटी कहाकू एठी इंडिकेट करछि बा मिनिस्टर को को परि भावना को इंडिकेट करछि. वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 30 सी विपिनर सी. वेरी गुड. सैटिरिकल माने व्यंग्यपूर्ण बा हास्यपूर्ण आंसर होछि हमरो करेक्ट आंसर. ओके. जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन दिला व्हाट डिड द ऑथर वांट टू रीडर टू शेयर. ऑथर एथि रीडर को सहित कोन शेयर करिया को चाहचंती. लाफ्टर हस, सिंपैथी सहानुभूति, द स्टोरी गल्प, काइंडनेस भी कोन सहायक भावना. कोनटा लेखक एथि अन्य मानक सहित शेयर करिया को चाहचंती. कोनटा शेयर करिया को चाहचंती. सिंपैथी सहानुभूति जोटा कि से झंडू प्रति देखैछन्ती सेहि प्रति सहानुभूति से देखैबाकू चेष्टा करछन. द नेक्स्ट क्वेश्चन थिला हु वाज द मिनिस्टर ऑफ द फिशरीज एंड फाइनेंस. फिशरी और फाइनेंस रो मिनिस्टर किए थिले. श्री महाराणा, झंडू, बाबू वीर किशोर, मनोज दास. Who was the Minister of Fisheries and Finance? Minister of Fisheries Finance रो मिनिस्टर की 32 सी. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. आगे जो माने ऑप्शन सी कमेंट करछ 32 से माने आंसर होछि करेक्ट आंसर. बाबू वीर किशोर इज योर करेक्ट आंसर. ओके. जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन जोटा हला क्वेश्चन नंबर 33
Sri Maharana had the only pukka house in the area. Pakka means it is in the area. 10 villages, 20 villages in his constituency, Babu Birkiswar's constituency. कोठी देला 10टा गाଁ रे ताकर एकमात्र पक्का घर थिला कि 12टा गाँ रे कि ताको कॉन्स्टिट्यूएंसी बा वीर किशोर को कॉन्स्टिट्यूएंसी कोठी एकमात्र पक्का घर थिला ताको वेरी गुड 20 villages among the 20 villages वीर किशोर को गोटे पक्का घर थिला श्री महाराज ओके क्वेश्चन नंबर 34 थिला why had Sri Maharana a considerable reputation Sri Maharana पर गोटे considerable reputation कोन पाई थिला he was a kind man he was a wealthy man he was a conscientious and a generous man he has a wealthy man and a good horse कोन पाई श्री महाराणा कर गोटे रेपुटेशन निज एरिया रे थिला कोन पाई थिला वेरी गुड भाग्यलक्ष्मी जितिना ठीक अछि जो मैंने कहते ही वाज ए कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड जेनरियस मैन समान का आंसर होची करेक्ट आंसर ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन की जुड़े क्वेश्चन नंबर 35 व्हाट डिड श्री महाराणा हैव 2 ponds full of choice fish a number of well cared cows a big pakka house all of the above श्री महाराणा को कोनटा थिला श्री महाराणा को कोन थिला श्री महाराणा को कोन थिला कोन थिला वेरी गुड समस्त कमेंट करो पिले करेक्ट आंसर होची ऑल ऑफ द अबव ताकर पक्का घर थिला ता सहित पोंड्स थिला ता सहित काउज मध्ये थिला व्हाट वाज द न्यू कास्ट दैट एमर्ज्ड पोस्ट इंडिपेंडेंस पर जो हुआ कास्ट तैयारी हला सेटा कोन लीडर्स फ्रीडम फाइटर्स पैट्रियट्स इंडस्ट्रियलिस्ट जो नुआ कास्ट तैयारी हला से कास्ट कोन थिला इंडिपेंडेंस पर जो हुआ कास्ट बराबर नोट करो 36 वेरी गुड पिले पैट्रियट्स हो तमरो करेक्ट आंसर बन नुआ में करो देशभक्त जो नुआ कास्ट थिगला सेला देशभक्त नेक्स्ट क्वेश्चन थिला वेयर वाज द ऑथर्स मैटरनल हाउस ऑथर को लेखककर मैटरनल हाउस बा महानकर घर केउठी थिला बा निज जन्मभूमि केउठी थिला इन श्री महाराणास विलेज नियर बाबू वीर किशोर हाउस नियर श्री महाराणास हाउस इन बाबू वीर किशोर विलेज कोठी लेखककर जन्मभूमि थिला कोठी थिला 37 कोठी थिला C near Sri Maharana's house is your correct answer okay next question थिला where was बाबू वीर किशोर from बाबू वीर किशोर केउठारे थियास्थिले the author's village the author's district Sri Maharana's village the author's maternal village बाबू वीर किशोर केउठारे बिलोंग्स करथिले बा केउठारे अधिवासी थिले very good the author's district होची तमरा करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन थिला who was the chairman of the reputation committee बा रिसेप्शन कमिटी किए चेयरमैन थिले रिसेप्शन कमिटी रो बाबू वीर किशोर श्री महाराणा दी ऑथर्स मैटरनल अंकल किए थिले रिसेप्शन कमिटी रो चेयरमैन 39B वेरी गुड निजे श्री महाराणा थिले नेक्स्ट क्वेश्चन थिला हु आर कंपोज द वेलकम सॉन्ग किए कंपोज करथिले वेलकम सॉन्ग श्री महाराणा बाबू वीर किशोर द हेड पंडित ऑफ द विलेज स्कूल द ऑथर वेलकम सॉन्ग को किए कंपोज करथिले the head pandit of the village school okay next question tela what question were asked by the children pila kon सब question पचारथिले does a minister sleep गोटे minister सुए की what does a minister eat and drink does a minister ever have colic or colds all of the above पिला कोन प्रश्न पचारथिले मिनिस्टर को
Very good, all of the above. Next question थिला, where was the first welcome art? First welcome art की कोठी कराइथिला? In the outskirts of the village, at the front gate of Sri Maharana's house, near the entrance of the village, near the village school. First art टा कोठी करा जाइथिला मिनिस्टर को? कोठी कराइथिला? On the outskirts of the village है correct answer. Next question थिला, how were the minister and the people treated at Sri Maharana house? Sri Maharana का house रे तांको minister और तांको लोगों को केमिति treat करेगा? At a sumptuous feast with coconut juice, with lassi, with flavored milk. कौन दिया है क्या? এটা আপনি ডাইরেক্ট লিখুন। এছাড়া ফটাফট লিখুন। এটা শুধু ডাইরেক্ট 43 no feast no এটা feast no. Very good. With coconut juice है correct answer. Next question thala, how many dishes were there in the luxurious lounge arranged for the minister? Minister को भाई लॉन्च रे केतेटा डिश व्यवस्था करा जाइथिला? 12 20 25 30 केतेटा डिश? फटाफट करो 45 बी very good 20 dish is your correct answer. Next थिला, why was the author unable to shout? कोन पई author माने shout करले बा चिल्लेले? कोन पई चिल्लेले? For his affection for झंडू, झंडू प्रति थिबा ताकर भलो पाइबा. He did not want झंडू to be punished. से चाहू नथिले कि झंडू को punishment मिलु. He did not want to disturb the minister's sleep. से चाहू नथिले मिनिस्टर को निद भांगी जाऊ. और लास्ट थिला all of the above. इति मध्यरु समस्त को ठीक. कोटा हबो करेक्ट आंसर? 45 C लिपु कहला C भाग्यलक्ष्मी डी सोनाली मध्य कहला डी वेरी गुड जो माने कोच ऑल ऑफ द अबव मिनिस्टर को से चाहूतले निद न भांगु झंडू को किछि पनिशमेंट न मिलु ता से झंडू प्रति ताकर जो अगार भल पाइ बेतला से सब हबो करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन थिला श्री महाराणा वाज स्वेटिंग सो प्रॉस्फुली that the author thought that he might dash in a few hours से एते जोर रे ताको देहरु झाड़ा बाहरला बा गरम लागुतला कि ऑथर भाबिले कोन हेबो कोलैप्स करि जिवे फॉल इन से वर्तमान कोन हबो ताको देह खराब हे जिवो कंप्लीटली मेल्ट आउट से संपूर्ण तरळी जिवे स्टार्ट टू क्राई कांदीबा आरंभ करिवे कोन हबो करेक्ट आंसर 46 सी कंप्लीटली मेल्ट आउट संपूर्ण रूपे तरळी जिवे बेली कहै जाय ओके 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 इवन नेक्स्ट क्वेश्चन की थोड़ा है कि टोटल वॉइस बाहर व्हाट डिड श्री महाराणा आस्क द ऑथर महाराणा ऑथर को कौन पचारथिले टू कैच झंडू टू फाइंड द मिसिंग कैप टू फेच हिम a glass of water not to disclose the matter to anyone कौन कहले झंडू को धरि आनो मिसिंग कैप कुआडे गला ताको खोजी आनो ताको गोटे ग्लास पानी मागिथिले ना डिस्क्लोज द मैटर ए कथा जेते अन्य कोन सर कोन सरी गला सरी निचालिथिले ए कथा जेते अन्य केही न जानतु बोली कहिथिले कोन कहिथिले वेरी गुड नॉट टू डिस्क्लोज द मैटर टू एनीवन ए जो घटना अन्य काहाकू न कहतु क्वेश्चन नंबर 48 थिला हु गार्लैंडेड द मिनिस्टर ऑन द स्टेज किए फूल तोड़ा दी स्वागत करथिना मिनिस्टर को स्टेज पर महाराणा ऑथर का अंकल महाराणा का नाइस किए वेलकम करथिला ऑथर सॉरी मिनिस्टर गार्लैंड किए करथिला वेलकम वेरी गुड करेक्ट आंसर होची श्री महाराणास नाइस नेक्स्ट थिला 49 थिला हु हैज द वेलकम सॉन्ग बीन ट्यून किए वेलकम सॉन्ग ट्यून करथिले बा बोलिथिले इन ए कंटेम्पोरेरी स्टाइल like a folk song in a prayer style in a kirtan style ओ भली भाबरे वेलकम सॉन्ग टी बोला जायतिला को भली भाबरे बोला जायतिला
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड इन ए कीर्तन स्टाइल गोटे कीर्तन स्टाइल रे वेलकम सॉन्ग टी बोला जायतिला क्वेश्चन नंबर 50 थिला हाउ मच मनी डीड श्री महाराणा ऑफर टू मिनिस्टर इन बिहाफ ऑफ द नोबेल केते टंका इन बिहाफ ऑफ नोबेल पई श्री महाराणा ऑफर करथिले ओके कहा को ना मिनिस्टर को 100 ए 101 रुपी 250 रुपी केते केते करथिले 50 बी वेरी गुड ए 101 रुपी ओके जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन why did श्री महाराणा give the coins to the minister कौन पई श्री महाराणा कॉइन देथिले मिनिस्टर को to use in the service of people to buy himself a new cap to donate to the party fund to help the patriots कौन पई देथिले से कॉइन देथिले to use in the service of people लोक मानकर काम रे जेंति यूज हे परिबा सेति पई what did the minister drink in between the speech मिनिस्टर ड्रिंक कौन करथिले बिटवीन स्पीच रे ए ग्लास ऑफ वाटर ए ग्लास ऑफ कोकोनट जूस ए ग्लास ऑफ मिल्क ए ग्लास ऑफ कर्ड कौन पीथिले ना ए ग्लास ऑफ कर्ड तोही रो ए ग्लास पीथिले व्हाट डिड द ऑथर बिलीव चेंज द कोर्स ऑफ द लाइव्स ऑफ श्री महाराणा एंड द मिनिस्टर द एपिसोड ऑफ द कैप झंडूस बिहेवियर द ब्रेक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द टू लाइंग ऑफ कोनटा करथिला कोन ना श्री महाराणा मिनिस्टर भीतर संपर्क कोनटा भांगी देथिला एपिसोड ऑफ द कैप टॉपिक को जो घटना घटिला झंडूस बिहेवियर जो मार्केट थिला तार बिहेवियर द ब्रेक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द टू उभय भीतर जो विश्वासपूर्ण भावना थिला टूटी गला लाइंग ऑफ श्री महाराणा के सोइबा बा मिछ कहिबा कोटा करकन सब वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड A. The episode of the cap है तुम्हारा correct answer. The political activities of two persons as humorous described in the story Mystery of Chse cap. The two persons कहा कहारा political activities है ये ऊपर वर्णना करा जाए विश्वनाथ दास and राधाकांत नायक and Mr. सूर्यकांत रॉय श्री महाराणा and बाबू वीर किशोर नवसुंदर पाढ़ी and रामाकांत रथ श्री करुणाकर पति and बाबू जगमोहन को दी जन को पॉलिटिकल कैरियर विषय आलोचना करा जाई अछि को भी जन वेरी गुड श्री महाराणा एंड बाबू वीर किशोर श्री महाराणा's house was a sort of a tourist spot for the people of the area कोन पे because it was a gang of old building it looked like a monument it was the only paka house in an area of 20 village the constitution design of the house was ले कोन पाई मिनिस्टर का जो हाउस थिला बा ताकर जो हाउस थिला ताको घरटी टूरिस्ट प्लेस थिला कोन पाई थिला वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड इट वाज द ओनली पक्का हाउस इन द एरिया ऑफ 20 विलेज 20 टी गारे एटा एक पक्का घर थिला ओके नेक्स्ट क्वेश्चन थिला द फोर मेजर कास्ट इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस कोन चारिटा मेजर कास्ट थिला इंडिया रे इंडिपेंडेंस पूर्व जमींदार टेनेंट्स आर्टिजन एंड वर्कर्स तापर असला ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र रिच पोर मिडिल अंडरडॉग्स आर्स्टोक्रेट्स द सिटी ड्वेलर्स द विलेजर्स द सर्वेंट्स कोटा थिला चारोटी मुख्य कास्ट केता बळे ना इंडिपेंडेंस पूर्व कोटा थिला ना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एंड शूद्र हला करेक्ट आंसर नेक्स्ट हला क्वेश्चन 57 in the early days of Swadeshi ministers all were full-fledged ministers and ministers daily life was largely made up of full means what na purna vikasita डर लागुची डर लागुची डर लागुची डर लागुची डर कोन पई लागुची चित्र कोन पई डर लागुची supervision of public works making plans for public welfare activities speech making at a public reception planning for unfulfillment of the vote फटाफट कमेंट करो कोनटा हो करेक्ट आंसर मिनिस्टर मानकर काम कोन थिला वेरी गुड मेकिंग प्लान्स फॉर पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटी हला तमर करेक्ट आंसर जोटे के ऑप्शन नंबर बी ओके बुझि परलो जेबा नेक्स्ट क्वेश्चन की एक सॉरी एटा भूल कहली
এটা স্পিচ মেকিং এট আ পব্লিক রিসেপশন, স্পিচ মেকিং এট আ পব্লিক রিসেপশন। সাধারণতঃ সেତେବେଳେ কোন করଥିଲେ না স্পিচ, ଅଧିକାଂଶ স্পিচ ଦେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ଓକେ, ତ ସି ହବ କରେକ୍ଟ आंसर। ମୁଁ ଭୁଲ କହିଲି, ବି ନୁହଁ ବେଟା, ସି ହବ କରେକ୍ଟ आंसर। ए ग्रैंड रिसेप्शन वाज अरेंज्ड फॉर, ग्रैंड रिसेप्शन कहां पे अरेंज करा जायतिला? नैरेटर, वीर किशोर, विलेज स्कूल हेडमास्टर, एजुकेशन मिनिस्टर। कहां पाई ग्रैंड रिसेप्शन अरेंज करा जायतिला? नैरेटर, वीर किशोर, स्कूल हेडमास्टर, एजुकेशन मिनिस्टर। वेरी गुड, वेरी गुड। बाबू वीर किशोर हला करेक्ट आंसर। नेक्स्ट थिला हु कंपोज द वेलकम सॉन्ग्स, ये वेलकम सॉन्ग कंपोज करथिले? ऑलरेडी एटा डिस्कशन सरिछि ना, किए करथिले? ऑप्शन देखे फटाफट कमेंट करो, किए करथिले? The head पंडित of the village lower primary school compose करथिले वेलकम सॉन्ग। The honorable minister Babu Bir Kishore was welcome at first welcome arc on the outskirts of the village, at the village entrance, at the welcome gate in a altar made special। ले एटा मध्ये डिस्कशन सरिछि। करेक्ट आंसर होछि पिले तमरो कोन ना 60 रो होछि ए, at the first welcome arc on the outskirts of the village। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, how was the honorable minister Babu Bir Kishore welcome? किपरि बाबू बीर किशोर को वेलकम करा जायतिला? He was welcomed by reception committee members, he was welcomed by the senior most members of the village, he was profusely garlanded and welcomed by Sri Maharana, the village girls welcomed him। किपरि बाबू बीर किशोर को वेलकम करा जायतिला? किपरि करा जायतिला? फटाफट कमेंट करो। Very good. He was profusely garlanded and welcomed by Sri Maharana। Next is question number 63. While walking with the minister, এটা প্লে এটা দ হবে, the minister, what did Sri Maharana से look suggest? महाराणा का look कोन ताको suggest करथिला? He was very much happy to have the honorable minister as his guest. He was proud of being by the side of the honorable minister. He was extremely happy to have the minister's long round arm rested on his second neck. He left, he felt much pride and joy। Would have a correct answer। ତାଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରେ ଯୋଉ ହାତଟି ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ତେଣୁ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ହଉଛି ତମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ସି ହଉଛି ତମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। What kind of a look did witnessed only once or twice later in his life? को बोली भगवान भावना लाइफ पर डायरेक्टर के जीवन रे थरे दी थरा आसी। Look in the face of the players after winning, look in the faces of a dying people who have lived a contented and a completed life, look of the person having earned everything in life, look in the faces of a woman for her newborn child। what have correct answer? 64 पिलेटा 64 62 नुहे 64 कितना? very good। look in the faces of a dying people who have lived contented and complete life, who were seen to walk parallel to the minister at the same distance। safe distance रे minister को को माने चली की जाउथिले? security guards of the minister, followers of the minister, the half-naked pot bellied uncivilized children including the writer, the aged person of the village। किए parallel distance रे जाउथिले? ना the half-naked pot bellied children including the writer। next question tela, why did the narrator separate himself from his companions as he was eager to see the minister? से minister को देखना को चाहते as he was eager to be physically close to the great man as possible। जेते संभव ताको सहित physically close हेबे, as he was eager to see what the minister was eating। से देखना को चाहते minister कोन खाउछंती, as he was eager to see how the minister was being treated by the people। लोक माने किपरि minister को ट्रीट करूछन। ओटा को करता
Very good. He was eager to be as physically close to the great man as possible. Hala tamara correct answer. Okay. Next question number 7. What was the most amazing thing? What happened before narrator side? कोणता तिला सबुठारु amazing जिंस जोटा narrator का आखि आगरे घटितिला. The dog appeared near the cabin door and ran away with the minister's suit. The minister suddenly have a loud cry as if someone attacked him. Notorious irresponsibly, Jhandu suddenly bounces towards the window and picked up the cap and disappeared. The minister talked to him while sleeping. कौन टाइटला कुकुर आसे ना को जोता नहीं गला कि जो झंडू थिला सी आसी कैप नहीं गला कि सडन उठी कि से निज सहित गपिबा को लागिला मिनिस्टर बा कांदी गले कोटा बगर आंसर very good. The notorious irresponsible Jhandu suddenly bounced towards the window and picked up the minister's cap and disappeared. Very good. Was unable to shout partly for fear that Jhandu might attack him, might the situation worsen, a crowd might gather there, the minister's snoring might cease. कौन पाई लेखक चिल्लेने लगे. Very good. The correction, the minister's snoring might be. Mysterious was said by who in a nobling tone. किए कहितला mysterious रे nobling tone महाराणा, bodyguard of the minister, minister's PA, the public relation officer. किए कहितला किए कहितला the minister's PA हला correct answer. Next question दिला who stood thunderstruck to learn about the misery of a mystery care by minister's care. The minister's PA and the public relation officer, Sri Maharana and the other patriots, senior most person of the Prehe village, Sri Maharana and the narrator. किए thunderstruck learn करथिला misery of a minister's care. Sri Maharana and the other patriots hala correct answer. Okay. तो ये थिला तमरो द मिस्ट्री ऑफ मिसिंग कैप रो 70 टा इंपोर्टेंट एमसीक्यू ऑलरेडी तुम मानक क्लास रो गोटे घंटा पाखा कि हेई गलानी तब एटा टिके ब्रेक दरकार मते बहुत जोर से ठंडा हे जेती तो कथा कहि पारबी तो टिके 5 मिनिट रो ब्रेक परे पुनी स्टार्ट करबा हम नेक्स्ट चैप्टर द मंकीज को एटा ही सबटु बड़ चैप्टर थिला मिस्ट्री ऑफ मिसिंग कैप तापर ये सब छोट छोट चैप्टर আছে অল্প অল্প क्वेश्चन আছে फटाफट सरी ओके ठीक है যদি কাହାର কিছু ডাউट ଅଛି কমেন্ট বক্স রে কমেंट करो म तार आंसर करि
ओके बस बात समझते हैं सर इंग्लिश रो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं इंग्लिश रो कोनसी भी लॉन्ग क्वेश्चन तुम मानकर क्लोज कोड टू आसीबार नाही केवल गोटे रिपोर्ट आसीबो गोटे राइटिंग स्किल जोटा नोट लिखिबो ओके सर कल फास्टर महामाराथन हबो बेटा एते बड़ जेते मते सर को तरफ किछ नोटिफिकेशन आसीनी जदि आसीला मु तुमको कहबी काली हबो कि न हबो ओके राति रे मु जणाइबी The white family is in a dash mood, serious, relaxed, sad and frustrated. White family जो थिला से ऊपरी मूड रे थिला, serious, relaxed, sad, frustrated. Sir, mix रो करंतु please. ओके ठीक अछि मिक्स रो परिवार काली सेशन जदी भाई परिवार ठीक अछि The white family is in a dash mood, serious, relaxed, sad, frustrated. फटाफट कमेंट करो वेरी गुड इन ए रिलैक्स्ड मूड को मूड रे थिले ना इन ए रिलैक्स्ड मूड हला करेक्ट आंसर मिस्टर व्हाइट इज डैश ऑफ पॉलिटिशियंस जियोलॉस प्राउड क्रिटिकल नन ऑफ दिस मिस्टर व्हाइट को परि पॉलिटिशियन थिले जेलस प्राउड क्रिटिकल नन ऑफ दिस वेरी गुड जितना ठीक अछि क्रिटिकल होस तमरो करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन थिला सर्जेंट मेजर मोरिस विजिट द व्हाइट फैमिली इन ए डैश वेदर सर्जेंट मेजर मोरिस को प्रकार वेदर रे व्हाइट का हाउस को बुलिबा को जाइथिले फाइन वेदर डल वेदर हॉस्टाइल वेदर टिपिकल वेदर फाइन वेदर डल वेदर हॉस्टाइल वेदर टिपिकल वेदर जितना सी अन्य माने कमेंट करो 3 नंबर वेरी गुड इन ए हॉस्टाइल वेदर होइस तमरो करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन थिला that the story of the monkey's paw is about magic evokes a dash response from the whites evokes माने पहले सृष्टि करिबा ए जो monkey's paw स्टोरी टा अछि गोटे मैजिक सृष्टि कला dash response from the whites को पकरी माने व्हाइट कर को परी रेस्पोंस आसी छी ओके क्यूरियस कोल्ड चीयरफुल मिस्टीरियस क्यूरियस कोल्ड चीयरफुल मिस्टीरियस को परी आसी very good curious hela tamara correct answer next question thala while narrating the story of a monkey's paw there was a ring of dash in his tone को प्रकार ring थिला ताका टोन रे pathos poignancy irony seriousness ताका टोन बा वॉइस रे को प्रकार ring ता थिला pathos poignancy irony seriousness पहले pathos means करुण और poignancy माने होची दुखित को परी शब्द थिला कोपर शब्द थिला वेरी गुड भाग्यलक्ष्मी जितिना ठीक अछि पहले करेक्ट आंसर होची सीरियसनेस ओके नेक्स्ट क्वेश्चन थिला ए मैजिक स्पेल ऑन द पॉ ग्रांट्स डैश विशेस टू इट्स यूजर 4 3 मोर देन 3 नन ऑफ दिस केतेटा विश मागिबार चांस थिला 4 3 मोर देन 3 नन ऑफ 4 3 more than 3 none of this 6b very good 3 hela tamar correct answer next question tela one who uses monkey's paw invites disaster pressure pleasure happiness जे monkey paw धरथिला बा invite कोन करथिला disaster माने कोन विपद pleasure माने खुशी pressure माने कोन चाप happiness माने मध्ये खुशी बट हैप्पीनेस माने खुशी प्लेजर माने अत्यधिक खुशी कोन करथिला देखो विपद को डाकुथिला तो करेक्ट आंसर होबा डिजास्टर
नेक्स्ट क्वेश्चन तला हर्बर्ट इज ए डैश बिलीव इन द मैजिकल पावर ऑफ मंकीज पॉ केमिति बिलीव करथिला हर्बर्ट मंकीज पॉ जो पावर मैजिकल पावर को फिर रिलुक्टेंट रैशनल नॉन ऑफ दिस पहिले रिलुक्टेंट माने होची विमुक्त और फिर मोर माने होची दृढ़ भावे विश्वास करिवा रैशनल मींस पार्शियल किपरि विश्वास करथिले बी रिलुक्टेंट विमुख भावे Question number 9 थिला the monkey's paw behaved dash in response to Mr. White's first wish. Nicely, menacingly, mockingly, hesitantly. प्रथम wish रे केमिति प्रकार से तार प्रदर्शन करथिला. Behaved in response to Mr. White. Nicely, menacingly, mockingly, hesitantly. Question number 9. B. Gitina. Very good, very good, very good. Menacingly la tomar correct answer. Next question thala Mr. White's first wish has been fulfilled dash dramatically, immediately, after a pretty long time, none of these. Mr. White का प्रथम wish केता बड़ा fulfill है. Very good. Dramatically fulfill हुई थला. Next question थिला which one of the following statements is false? को statement है तो false. Mr. White is sure of Herbert having plenty funny remarks after his return from the factory. A man clad on business suit is moving outside. Mr. White has been hit several times. She has a look at his strange behavior. Which one of the following statement is false? को statement है तो false है. Okay. Very good. Mistress White has been seen several times. Next question thila which one of the following statement is true? Mr. White allows the unknown person to come in. He does not look uncomfortable. This unknown person belongs to the maha and a maidens. Next question thila option ra his words do not surprise Mistress White. कोठा को correct unknown person कोठा true please. तो चारोटी सेंटेंस दिला ता भितर कोठा ट्रू. Very good. Question number 12 रा आंसर होची this unknown person belongs to the mob and the many. Question number 13 थिला now calm down. No point jumping to the conclusion. The underline word रा माने कोन indecisive, arriving at the conclusion in a haste, jumping from one statement to another, coming to the conclusion after a careful thought. पहले underline word होची मो underline कर दोची jumping to the conclusion. पहले indecisive माने कोन? indecisive रा माने कोन? अस्थिर भाव. ओके और haste माने जल्दी. haste माने कोन? जल्दी. कौन होगा करेक्ट आंसर? jumping to the new conclusion. पहले arriving at the conclusion in a haste शीघ्र कोन करिबा गोटे conclusion रे पहुंची दिबा. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन तला क्वेश्चन नंबर 14 the expression badly hurts me जो एक्सप्रेशन अछि badly hurts ता माने कोन? serious beaten, injured in an accident, seriously injured, none of the above. badly hurt माने कोन? What is the meaning of badly hurt? What is the meaning of badly hurt? Question number 14. Seriously injured, none of these, injured in an accident, seriously beaten. The correct answer is seriously injured. Okay. She breaks up the underlying phrasal verb. Breaks up. एटी phrasal verb गोटिया अछि मात्र breaks up या माने कोन? Stop suddenly, breaks into tears, collapse or faints, occurs. Breaks up माने कोन?
ले फ्रेजल वर्ब को क्वेश्चन आसीबो कारण फ्रेजल वर्ब तमरा ग्रामर रे अछि ओके तो फ्रेजल वर्ब को मध्ये क्वेश्चन आसीबो वेरी गुड भाग्यलक्ष्मी कोलैप्स और फेड्स ओके नेक्स्ट क्वेश्चन थिला caught in a monarchy okay but caught in the machinery this statement implies Herbert the only child of his parents is dead the white son handles the machine with great skill Herbert is fighting for his life mechanical work gives Mr. White a great pleasure what about correct answer question number 16 16 बराबर बोल करो A very good correct answer होची Hobart the only child of his parents is dead stranger 200 pounds this statement signifies कौन signifies कला winning 200 pounds the stranger's joke mistress White's gleeful response to the receipt of the 200 pounds fulfillment of Mr. White's first wish এটা কোন ইমপ্লাইজ করছি বা এই স্টেটমেন্টটা কোন ইমপ্লাইজ করছি very good very good very good fulfillment of Mr. White's first wish okay next question thila the news of Hubbard's death makes Mr. White dash silent scream terrible grief stricken unbelievably calm ଯେତେବେଳେ ହର୍ବର୍ଟ ର ଡେଥ୍ କଥା ଶୁଣିଛି ମିଷ୍ଟର ସ୍ପାଇଟଙ୍କର କଣ ହେଇଛି terrible grief stricken okay next question thila Mr. White's reference to the other two wishes is one devastating shock anger roughness none of this Mr. White ର जो reference थिला सेटा केमिति थिला shock anger roughness none of this किपरि थिला पिले shock हैला तमरो करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन थिला दी वर्ड mangled रो माने कोन distinguished mark disfigured mixed mangled रो माने कोन very good disfigure next question thila mistress White wishes her son come to meet her be fair life again mistress White wishes कोन मागिथिले कोन मागिथिले कि ताका son पुणी थरे बंची उठो life again Mr. White yells to his wife's dash to go for the other two wishes request advice pressure none of these Mr. White yields to his wife's dash to go for other two wishes. Request, advice, pressure, none of this. Pressure होची correct answer. Next question थिला putting the spell on the monkey's paw man's insatiable greed for more, insanity, disenchantment with life, craving for achieving more. कौन 23 पिले insatiable greed for more okay next question thala what was Mr. White's complaint about the rain it was non-stop rain it was the thunderstorm raining heavily politicians were inactive when the road was getting overflowed with rainwater there was a great communication problem during rainy days ये जो चारिटा देछि या भितर कहा विषय रे मिस्टर व्हाइट रेन संपर्क रे कहछंती कहा संपर्क रे कहछंती Politicians were inactive when the road was getting overflowed with rainwater. Next question thila what happened in Bombay during the rainy season? Bombay re rainy season में कौन हुए? The traffic system is totally failed. People were holed up in Bombay during the rainy season. The whole town is flooded with rainwater. One cannot comes out of his home. Good है correct answer. फटाफट कमेंट करो.
Very good. Correct answer is people are holed up in Bombay during the rainy season. Herbert wanted to go to India to see the beautiful tourist spot, to see the old templates and visit one of the holy men performing miracles, to start a business there, to visit the holy place there. कौन पे हर्बर्ट इंडिया आसବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ନା କଣ ପାଇଁ ନା to see the old temples and visit one of the holy men performing miracles. Next question number 27. What was the special about the monkey's paw as told by Morris? Morris जो कहिथिले monkey's paw विषय कोन कहिथिले? It looked like a tiger's paw. It had spell put on it by an old holy man. It looked fascinating and quite different. It was very hard and oily. कोन कहिथिले? Very good. It had a spell put on it by an old holy man. Next question thila. What was the strange magic about the monkeys? Started dancing when touched by someone. It made a thrilling sound when someone whispered to it. Three people could not each have three wishes from it. One would hear a soft sweet music from it. Pile eta to pura direct jana purchi यार answer अब three people could each have three wishes from it. Question number 29 thila. Third wish of the first owner of the monkey's paw was first owner का third wish कौन था? To have the gold coins, to end his life or death, to make him immortal, to have a lot of wealth. Very good. To end his life or death. Next question thila. Morris suddenly threw the paw into the fire to get the great surprise of Mr. White because he was afraid of the monkey's paw. He did not want to keep in anymore. It had caused him enough trouble already, and he did not want his friend to be put into trouble. He wanted to be free from the burden of keeping it. Very good. Question number C. It has caused him enough trouble already, and he did not want his friend to be put into trouble. Hala. Correct answer. Okay. Jiba. Next question. Next question thila. When Mr. White started to raise his hand, Morris jumped forward to stop him and told him not to express any wish before the monkey's paw. To wish for something sensible if he wanted to wish. Don't wish anything abuse. Not to keep it with him. Correct answer. Very good. To wish for something sensible if you wanted to wish. Next question thila. What was the response of the monkey's paw when Mr. White wished for 200 pounds? An envelope containing 200 pounds was found on the floor. The paw started moving and twisted in Mr. White's hand like a snake. The paw was seemed to be alive. The paw dropped suddenly on the floor. Correct answer. The paw started moving and twisted on Mr. White's hand like a snake. Next, what information did the stranger bring from Mistress and Mr. White? Their son Herbert had gone on the Italy a tour to London. Their son was badly hurt, but he was not in pain. Their son was rewarded 200 pounds for his efficiency. Their son was fired from the service. कौन मेसेज आसीथिला 33 कौन मेसेज आसीथिला their son was badly hurt but he was not in any pain. Okay. Next question number 34. What did information give the stranger at last to the whites? The company would give job one of the members of the family. The company would not be held responsible for the death of the Harper. The company, in consideration of their son's work, would like to give them sum of 200 pounds as the compensation. Last, 3 option
ଟା बोधे मिस्टली प्रिंट है कोटा को करेक्ट आंसर 34 very the company in consideration of their son's work would like to give them sum of 200 pounds as the compensation. What was the reaction of the whites after listening the sad news? Listening the sad news from the stranger. Mistress White and Mr. White could not move aside. The whites were greatly shocked and could not move a step. Mistress White screamed and Mr. White fell to the floor in a faint. Both of them fell down fainted. What have I got answer? Mistress White screamed and Mr. White fell to the floor in a faint. What did Mr. White tell his wife? He could only recognize their son by his wristwatch. He could recognize Herbert by his clothes. He could not recognize their son was unable to. Their beloved son's body had been mangled in one machinery. Very good. He could recognize Herbert by his clothes. Mr. White told Mistress White that Herbert was dead, but he was found to be unhurt. Herbert was too unmindful while working. Herbert was mangled in the machinery. Herbert was seriously wounded. Very good. Herbert was mangled in the machinery. Question of the writer give to the reader through the story. It is wish to satisfy our wants with what we have. It is wish to lead the long living. It is dangerous to wish for something beyond our reach. Always wish for high things. It is dangerous to wish for something beyond our reach. Hela correct answer. Okay. बुझी पारलो? Okay. Our important 38 questions of which chapter? The monkey's paw chapter. Okay. पहले हमने बारंबार लिए कहो रखी बहुत जोर से ठंडा है गई तो वॉइस बाहर नहीं तो पूरी 5 मिनट ब्रेक में भी तापर पुणी स्टार्ट करी ओके
ओके देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन थिला माय मदर चैप्टर थिला जोटा कि चार्ली चैपलिन को ऊपर अछि तो चैपलिन्स फादर वाज डैश thoughtful silent a brilliant artist all of these चैपलिन को फादर कौन थे चैपलिन को फादर कौन थे वेरी गुड ए ब्रिलियंट आर्टिस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन थिला he was endowed with a dash voice soft voice harsh voice magical voice grave and deep voice माने एडवर्ड माने पाइथिले से कोन किपरिया वॉइस पाइथिले प्ले ग्रेव एंड डीप वॉइस पाइथिले ग्रेव एंड डीप माने कोन ना गंभीरपूर्ण वॉइस पाइथिले दी vaudevillians ड्यूरिंग चैपलिन्स टाइम वेयर vaudevillians चैपलिन को समय रे किपरि थिले रिफाइन एक्सेप्शनली ब्रिलियंट आर्टिस्ट क्वाइट सेंसिटिव addicted to drinking the correct answer is addicted to drinking next question thala a majority of stars were paid dash because they spent their money lavishly at the theater bar केतबेले ताको पेड कराउतले मेजरेबली वीकली हैंडसमली ऑल ऑफ दिस केमिति स्टार्स को सब पेड करा दउथिला केमिति पेड कराउतला handsomely very good next question thila Chaplin's father died because of his alcoholic habit addiction to drinking utter carelessness isolation from his family Chaplin कौन को father कौन पे डेथ थिला very good alcoholic habit जुगो तांकर डेथ थिला when drinking Chaplin's father was in a dash mood defensive frustrating violent sober केमितिया मूड रे चैपलिन को फादर पी साइला पर केमितिया मूड रे रहउतिले वेरी गुड violent next question दिला Chaplin's parents dash in his infancy divorced were fine were typical none of this Chaplin का फैमिली बा ताकर पेरेंट्स के बापा माथिले पिला दिनो कोन हे जैछि very good divorced next question दिला his mother was a dash singer non-descript moderate celebrated gifted ताको मां को भली प्रकार सिंगर थिले कहा मां चैपलिन को मां को भली प्रकार सिंगर थिले celebrated okay next question दिला the word larynx means larynx माने कोन larynx means weak inflammation of a larynx incurably weak long breaths पिला माने larynx होती कोन ना साधारणतः स्वरतंत्र जनित समस्या का हमें कहे larynx माने कोन वॉइस ठीक हबो नाही तेनो करेक्ट आंसर हो inflammation of the larynx okay the cracking voice of a Chaplin's mother was met with dash response from the audience जो cracking voice तांकर आसुतिला ऑडियंस ताको कोन करथिले ridiculous sorrowful delirious gloomy कोन करथिले पिले ridiculous means हास्यास्पद करूथिले हसुथिले Chaplin made his appearance on the stage when he was 5 dash माने को भली भाबरे Chaplin निचर स्टेज शो रो फर्स्ट अपीयरेंस देथिले ब्रिलियंट फर्स्ट लास्ट मेडल नॉन ऑफ दिस ले करेक्ट हम किसम प्रूव करले मेडल रो अर्थ प्रथम जन करेक्ट आंसर हो मेडल नेक्स्ट थिला the cracking voice of the Chaplin's mother met with the audience's dash shock wrath derision all of the above कोन करथिला ऑडियंस मानु को कोन करथिला जो ताकर वॉइस रो जो क्रैक होतिला कोन करथिला derision means हास्यास्पद the stage manager led Chaplin to the stage amidst great dash option this show ठीक है एटा ऑप्शन नहीं तो माने आंसर को
The stage manager led Chaplin to the stage amidst great dash, noise, excitement, pleasure, uncertainty. Option ମୁଁ କହିଦେଲି noise, pleasure, excitement, uncertainty. कौन हबो? Noise. Very good. Correct answer होची पिले कौन ना noise. Next question थिला Jack Jones was a great dash. Noise, excitement, pleasure, uncertainty. पिले ये ऑप्शन भूल ही जाइए पिले एटा हबा कथा क्वेश्चन नंबर 13 रे ऑप्शन एटा भूल ही ये चारटी ऑप्शन नुहे तमरा क्वेश्चन नंबर 14 रे ऑप्शन होची कॉमेडी लिरिक एलिजी सॉन्ग जैक्चुअल कोन थी कॉमेडी लिरिक एलिजी जोन सॉन्ग जैक्चुअल कोन थिले पिले जैक्चुअल थिले कोन ना सॉन्ग करेक्ट आंसर होची कोन सॉन्ग Next question थिला Chaplin's first appearance on the stage was quite encouraging, hopeless, contemptuous, none of these. Chaplin का जो first stage show थिला सेटा की पड़िथिला encouraging होची तमरा correct answer. Okay. Next question थिला presence of Chaplin's mother on the stage was Chaplin का जो stage program करथिला सेटा की पड़िथिला painful, sorrowful, electrifying, all of these. Electrifying. Next होची at last fate dash on her sail sword front both hand plus sailed जहा sword पाखा पाखी सैया तेनो करेक्ट आंसर हो तमरो front बुझि परिलो इवन नेक्स्ट क्वेश्चन की in her moments of crisis Chaplin's mother restored to saying prayers religion the priest's help none of the above religion. Next question थिला the sight of a mother's tear dash Chaplin's reading shock sadness vexed none of the above the correct answer होची vexed. After going to church mother's relationship with her friends almost snapped completely after turned strange short let's snap माने होची भांगी गला okay. The word travel माने कोन wandering tiredness painful one ले traveler means होची कठिन परिश्रम बा painful one okay बुझि पारलो नेक्स्ट ला is marked by dash and dash poverty comfort sloth influence none of these dash and dash property no এটা dash property এই dash টার মানে দিছে very good affluence question number 23 थिला Chaplin's mother was short dash and sensitive fat weak pretty vanity কি পড়েছিলে very good vanity. Next question थिला during Chaplin's time jobs such as nursing was quite popular infrequent prestigious none of these Chaplin तो समय रे nurse टाइपटा को टाइप रो थिला infrequent despite all odds Chaplin's mother was fine tolerant happy all of them very good about tolerant okay. Next question थिला some vaudevillians were paid high salaries not alone for their talent but because they were committed to their jobs they spent most of their money at the theater bar they were the asset of the theater they remained the attraction of the spectators they spent most of their money at the theater bar. Why was Charlie Chaplin suspicious of his mother's degree of feeling for his father as his mother sometimes got irritated when he wanted to know about his father his mother was worried about her child's future but his father was indifferent
as something she would give him a sympathetic account of his father and at other times talk of his drunkenness and violence as his mother at times before his father's rude behavior. Okay. कौन होगा correct answer? Very good. As sometimes he would give him sympathetic account of his father and other times to talk him. Okay. Even next go. When his mother got angry with him, what did he say? He would become a drunkard like his father. He would finish up in the gutter like his father. His future would be dark if he acted as his father. He would become a Virgilian like his father. ଯେତେବେଳେ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି ଚାପ୍ଲିନଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ମା କଣ କୁହନ୍ତି? କଣ କୁହନ୍ତି? He would finish up in the gutter like his father. ପିଲା ଦୁଇଟି क्वेश्चन ପରେ ଆଜିର ସେସନ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯିବ। ପିଲା ମାନେ ଯୋଉ ମାନେ स्टे हंग्री स्टे पुलिस जो चैप्टर टी लास्ट चैप्टर ଥିଲା ସାର ମଧ୍ୟ पीडीएफ ଆଣିଥିଲି बट ड्यू टू ମୁଁ ମାନେ କିଛି କଥା କହିବା ପୋଜିସନରେ নাই କଥା ଠିक ସେ କହି ପାରୁନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏତିକିରେ वाइंड अप କରୁଛି मोस्ट प्रोबेबली ଯଦି କାଲି ସକାଳେ ସେସନ ହେଲା କାଲି ସକାଳେ ତମର एमसीक्यू विथ बीएसटी सहित ସେଇଟା ମଧ୍ୟ कवर अप କରିଦବା ओके। हाउ वाज द राइटर्स मदर किसी व्यस्त होगा नहीं मेरा पीडीएफ का से लास्ट चैप्टर का पीडीएफ का ग्रुप रे शेयर कर देबे तुम माने देखि दबो। How was the writer's mother able to support herself and her children as she belonged to a rich family, as she had huge bank balance, she has a good actress of her time, she was earning 25 pounds in a week. Very good. She was earning 25 pounds in a week. Last question. Chaplin's mother had been having troubles with her voice because too many programs made her voice rough. Even a slightest cold affected her larynx. She did not take care of her throat. She was addicted to drinking too. Very good. Even a slightest cold affected her larynx. Now, what question is 31 questions. The writer's mother was so worried about her voice and her decreasing theatrical engagement that her healthy impaired day by day, which made her a nervous wreck. She lost her normality of mind. She became sad for her low income. She was disappointment terribly. Very good. Her healthy impaired day by day, which made her nervous wreck. प्ले ये थिला आजिरो जेतिकी क्वेश्चन डिस्कशन करिवार थिला आउ केवल स्टे हंग्री स्टे पुलिस रही गला ता पई तमे प्ले वीडियो को गोटे लाइक कर दियो चैनल को सब्सक्राइब करिया जते सारा फ्रेंड्स समान सहित शेयर कर दियो आ जो माने फास्ट क्लास से मो सहित जॉइन कर समान बहुत बहुत थैंक्स एंड लव फ्रॉम एसएस फाउंडेशन। रिपोर्ट राइटिंग रे सिलेक्टिव खाली देई देछि ता सिलेक्टिव तमे चैनल पेज पे जाई देखि परिबो जो माने नुवा देखु चल वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप रे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक क्लिक कर जॉइन कर जा सेठी सुब्रांश सर मेसेज करी फिजिक्स केमिस्ट्री मध्ये सिलेक्टिव पाई परिबो ओके। आज पे एतिकी रहिलो टाटा टेक केयर बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स थैंक्स फॉर वाचिंग।